Good evening and a welcome to this live presented by Safe Family Foundation and Men Welfare Trust Delhi. In this situation, we all know that how the entire country and the entire world is fighting against this corona pandemic. Businesses are locked down, everybody is sitting at home, working from home. And in this situation, we thought of covering the issue of mental health of specifically to men who are sitting at home and they are worried for various reasons. कल यानी 7 अप्रैल को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसपे हम देखते हैं कि बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और हमारा देश जिसमें तकरीबन 92,000 पुरुष, जी हाँ 92,000 पुरुष हर साल आत्महत्या कर देते हैं, ये बहुत ही विडंबना की बात है कि मेल मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम बहुत ज्यादा गंभीरता से इसको डिस्कस नहीं करते। तो आज इस मौके पे हमारे पास एक बहुत ही एमिनेंट पैनल यहाँ पर मौजूद है और हम इस इशू को स्पेसिफिकली कोरोना लॉकडाउन में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं स्पेसिफिक टू मेन, उसको आज डिस्कस करेंगे। आई एम जॉइंड बाय मिस शिवानी टुडे. Shivani is basically a relationship expert, a marriage counselor, and also a psychologist. She's been a known face in the field of mental health, and she's been working with various NGOs, prestigious organizations, educational institutions, and the list goes on. Thank you, Shivani ji. Thank you for being with us. Go on to Ms. Shivani now. Shivani ji, देखिए ऐसी सिचुएशन में इस लॉकडाउन में there are a lot of men who are suffering through anxiety, depression हो रही है, किसी को लगता है कि मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका क्या कहना है? हाउ डू दे कोप अप दिस सिचुएशन? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि दिस COVID-19 हैज इंक्रीज्ड केसेस ऑफ पीपल एक्सपीरियंसिंग पैनिक अटैक्स, इरिटेबिलिटी, एग्जॉशन इंड्यूस्ड हेडेक्स, difficulty in sleeping, lack of appetite either goes down or goes up because of you're depressed, and most of the men are the sole bread earners for their families. So उनके ऊपर ये टेंशन काफी ज्यादा रहता है कि क्या हमारी जॉब एट द एंड ऑफ द मंथ बची रहेगी, हाउ सेफ इज माय जॉब, विल आई बी एबल टू पे माय मंथली रेंटल्स, या विल आई बी एबल टू पे माय EMIs, और अपने फैमिली को लेके कोविड की जो थ्रेट्स आती रहती हैं आए दिन, उससे मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा, बच्चों की एजुकेशन, इमेजिन समबडीज चाइल्ड इज इन 12th स्टैंडर्ड, उसके लिए तो सब कुछ रुक गया इस मोमेंट पे। Financial stability, health of parents, especially if they're living in a different city or in a different location, how they would be taking care of themselves, decreased activity and emotional highs and lows, especially somebody who is just not able to go outside. Imagine करिए आप उस ऐसे इंसान की मेंटल कंडीशन जिसको बाहर निकलना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है, उसको सडनली एक रूम में हम लॉक करके बोल देंगे अगले 15 दिन या for the next indefinite period, maybe a month or so, nobody knows that. How is he going to cope up with that? So men are raised to suppress their feelings because sometimes of the social stigma. Sometimes they feel they can they can deal with it on their own. Sometimes there is embarrassment, not wanting to appear weak, or not having somebody to talk to, are all the reasons why men often choose to suffer in silence and on their own. In situations में एक आदमी जो इस situation से गुजर रहा है वो काफी चीजें कर सकता है। पहला काम तो वो ये कर सकता है कि he can find somebody whom he can talk to, in the sense जिस इंसान के साथ वो comfortable होके अपनी feelings को share कर सकते हैं, especially अपनी uncomfortable feelings, अपनी negative emotions को, frustration को, sadness को, anxiety को, और वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे उनको कोई भी judgment वाली feeling ना आए। एक तो वो कर सकते हैं। दूसरा, वो अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं, इन द सेंस कि जब हमारे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमको लगता है कि हम अगर बस ये सोच ले कि जस्ट थिंक पॉजिटिव, just by thinking positive you will not be able to ward off those negative thoughts. So you will also have to have a backup plan in order to change your cognitive distortions from negative to positive. You need to have a plan so that you can change your negative thoughts to more constructive thoughts. एक तो वो कर सकते हैं।
दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप एक घर में पेट ला सकते हैं. Nothing can replace human touch, but if you have a pet at home, or if you can get a pet, it can really relieve you from some loneliness. Okay, you can also, because you're confined at home, you can also exercise. Okay, you can also be in sunlight for some time, because jab hum sunlight mein rehte hain, it increases our serotonin levels and it makes us feel better about ourselves. Aap wo kar sakte hain. You can also because हम इस लॉकडाउन पीरियड में बाहर नहीं निकल सकते, हम फ्रेंड से फेस टाइम को हम प्रायोरिटी बना सकते हैं कि चलो दिन में कुछ टाइम हम just by talking about how you feel about yourself and how you feel about things around you can really relieve you from the depressive feelings or depressive thoughts you're experiencing in that moment. And if you have a supportive spouse, it can also help, because uh, 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 this lockdown has also increased experience. I mean, sorry, I take my words back. So men who have to remain in this quarantine period also may be experiencing trauma triggers, because sometimes they go through domestic violence or abusive partners. उस केस में and if they don't have any support system, उस केस में क्या करना चाहिए? Sometimes people do feel suicidal also. So उस केस में you should at least let one person know that I'm going through these things, so that he has somebody to fall back on. So it is important to reach out to somebody who can give you some hearing at least. Yeah, I'll come back to you for more information, Shivani ji. जी शिवानी, ऐसी सिचुएशन हम आमतौर पे देख रहे हैं जहां पर आदमी को लग रहा है मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे देखूंगा, अपने घर को कैसे देखूंगा, बट दे डोंट रीच आउट टू पीपल. मतलब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है कि दे रिमेन साइलेंट अंटिल देयर इज एन इमरजेंसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन. क्या आपको लगता है कि ऐसा है? और अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या ऐसी कोई हेल्पलाइंस हैं गवर्नमेंट की जो, या वे डू दे रीच आउट टू? कोई ऐसी कोई निशुल्क हेल्पलाइंस या कुछ जिसके बारे में आप बता पाए, अगर किसी को ऐसी सुसाइडल टेंडेंसीज हैं तो वो कहाँ जाए और वो क्या करे? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज लर्न्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द यूथ. ओके, व्हेन द मैन इज अ यंग बॉय. सो एज अ यंग बॉय, vast majority of men show their emotions by shouting and screaming, and they thought that it was accepted as a norm, and then they copied it. So now the problem rises when the young boy grows up. Okay, he doesn't see many males talking about their emotions, especially the negative ones, openly. So the messages he receives is that be brave. Okay, man up, as we say. So I think one of the things that needs to change in the society for adult men is to demonstrate that talking about your negative feelings, your negative emotions is absolutely okay, because this may also encourage younger generation of boys to grow up by seeing vulnerability as an accepted behavior. Okay, and for that we need to also broaden our horizon, because if somebody is struggling with feelings or thoughts of depression or anxiety, it's very difficult for them to open up. But if as a spectator, if as a good friend, you see your friend in trouble, what you can do is you can ask open-ended questions like, are you struggling with something? Can I help you? Is something bothering you? I have seen a noticeable change in your behavior. Is everything okay? I'll appreciate if you use Hindi. A lot of our viewers, they always comment, us that why the programs are not in Hindi. ओके, सो अगर एज अ वेल विशर, अगर आप अपने फ्रेंड के वेल विशर हैं, अगर आप ये सवाल पूछें उनको कि क्या तुम किसी चीज से परेशान हो, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट, मुझे तुम काफी दिन से ठीक नहीं लग रहे हो, इज एवरीथिंग ओके विद यू. अगर हम अपने फ्रेंड के, जो आपको लगता है कि विजिबली डिप्रेस्ड है, या उसके he's suffering with something or dealing with something, he is not able to share with you, अगर हम उनके specific behaviors पे फोकस करें where he does not feel judged. Okay, and also not to put the person on a defensive front. Okay, just giving them an opportunity to share and respond.
ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी है, हम जब एक केयर टेकर की भूमिका निभाते हैं, हमें ये समझना पड़ता है या समझना चाहिए कि हमारा काम उसके प्रॉब्लम को फिक्स करना नहीं है. हमारा काम है जस्ट टू बी क्यूरियस एंड लिसन टू योर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस वट एवर ही इज गोइंग थ्रू. अगर आपको लगता है किसी भी टाइम पे वो सुसाइडल है, और यू शुड मेक श्योर दैट यू आर नॉट द ओनली वन. आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि are you sure that I am the only one who knows about it? Do you want to tell your mom and dad about it? Can we find a support network for you so that you can open up? कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपके जो फ्रेंड होते हैं जो इस सिचुएशन में होते हैं, वो एक थेरेपिस्ट को ऑलरेडी मिल रहे होते हैं. अगर इफ यू कैन मैनेज टू गेट द थेरेपिस्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप अपने फ्रेंड के थेरेपिस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट लीव अ मैसेज. नाउ द चांसेस आर द थेरेपिस्ट मे नॉट गेट बैक टू यू, बट एटलीस्ट यू हैव मेड श्योर दैट ही और शी इज अवेयर ऑफ दैट, so that you can help. And just be in constant touch with your friend, just not to collar him, just not to bombard him with your questions, just to feel him, okay, I'm there for you. So one has to be a patient listener also. Ms. Shivani, what are your message to these people who are having these stressful times? See, मैं एंड में सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि if somebody is suffering from depression or negative thoughts or anxiety, please reach out to people. It can be a friend, it can be a neighbor, or even if you are unable to find such a person, please reach out to any helpline. There are so many helplines in Delhi. सुमैत्री हो गई, स्नेही हो गई, और भी helplines हैं जो distressed और depressed लोगों के लिए 24/7 काम करती हैं. Please find somebody, because you are important, your mental health is important, and you know what we can do as a listener is to encourage you and to make you feel comfortable that you are important too and your life is important. That's So a very please important thing. Actually, for most men, what happens is that everybody else comes first before they feel that they are themselves important. Dr. Ashish